Here, I welcome you to Gus Pro, and this time the setting is a bit changed. This is basically season 2, जहाँ पे हम लोगों ने after feedback coming from all of you decided कि हम लोगों के साथ one-on-one interview करेंगे, लेकिन आम लोगों के साथ नहीं. ये special लोग हैं जो कि startup world के अंदर, industries के अंदर, corporate के अंदर जो है उन्होंने अपना नाम बनाया है, और we will have a discussion कि किस तरह से ये लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, and this will obviously create an inspiration for all of you that are watching. और इसी को लेके आज I have Aruj over here. Aruj is actually a very close friend of mine, और I requested her कि this is what I want to do with season 2, and she has been kind enough to support me on that. Thank you for being here. So I mean, I know everything about Aruj as far as because we were together in Acumen Fellowship. But for you, I would like कि आप अगर introduce करवाओ अपने आप को कि how your journey started, where are you right now, a bit about your background, your studies, और फिर हम आपके venture के बारे में further discuss करेंगे. ठीक, thank you Azanfar and hello digitally everyone. तो basically मेरा नाम अरूज है, मैं लाहौर से हूँ, but my journey essentially I'll say कि if one word I could use for my journey, that would be curiosity. तो throughout my life I've always been a very curious person to kind of like see कि लोग क्यों behave करते हैं इस तरह, माशरा ऐसे क्यों है, कैसे आप तब्दीली ला सकते हो माशरे के अंदर. तो इसी को लेकर मैंने जब अपनी पढ़ाई की तो मैंने सोशल एंथ्रोपोलॉजी में की थी. सोशल एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा मौजू है जो देखता है कि सोसाइटीज किस तरह बनती हैं एंड सोसाइटी में आप चेंज किस तरह ला सकते हो और क्या क्या चीज़ें आती हैं. तो वो मैंने उसके अंदर अपना अंडरग्रेड किया. उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स किया और मैं फिर लाहौर आ गई. तो मैं लंदन में अपना कर रही थी अंडरग्रेड और मास्टर्स, एंड उसके बाद लाहौर आके जिस तरह के हम सारों को पता है कि यहाँ इतनी वैरायटी नहीं है जॉब्स की, तो everyone kind of joins the corporate sector. True. So I joined Coca-Cola over there. I was mostly working in PR and communications and would kind of look after Coke Studio की comms. I worked there for 3.5 years. Then I shifted to British Council. उनकी लाइब्रेरीज खुल रही थी. तो ब्रिटिश काउंसिल में हुआ ये था कि उनकी लाइब्रेरीज एक बहुत अहम हिस्सा थी ब्रिटिश काउंसिल का, और फिर 9/11 के बाद वो लाइब्रेरीज बंद हो गई. अच्छा. तो वो एक इंस्टीट्यूशन थी पाकिस्तान में जहाँ आपके इतने ज़्यादा CSS के ऑफिसर्स बने, वहाँ से लोग पढ़ते थे, डॉक्टर्स बनते थे. तो वो एक इंस्टीट्यूशन था जो कल्चरल हब बन चुका था, जो बंद हो गया था. तो 14 सालों के बाद वो वापस से खुल रहा था. And they needed a marketing manager, so I kind of joined British Council over there, and we revamped the libraries and we launched them in 2016. और फिर उसी दौरान 2016 के अंदर हमें घर पर का भी आइडिया आ गया. तो जैसे कि मैं पहले कह रही थी कि हमेशा से ये था कि कोई तब्दीली करनी है. मुझे वैसे ही लफ्ज़ बहुत बुरा लगता है but I don't want to get into that, but मगर था ये कि अगर आप एक प्रिविलेज खानदान से आते हैं, आपकी एक जिम्मेदारी भी है माशरे के लिए, तो वो ही लेकर घर पर हमने शुरू किया. ठीक है, ठीक है. But coming back to your professional journey, Coke and then British Council, those are obviously big names, everybody knows about them. So transition कैसे हुआ? Because Coke is pure corporate, British Council on the other hand has the impact side to it as well, you know, creating that difference. So how you switched from Coke to British Council? I think it was a difficult transition because Coke बहुत fast paced था. British Council is an amazing institution, but the work over there is of completely different nature, right? तो वो एक institution है that works in education sector, their libraries, their arts and cultures. So it's kind of like adapting yourself to a different framework. And there was more purpose over there because you could kind of see कि वहाँ change भी आ रहा है, right? They have amazing programs like Take a Child to School. They also do a lot of programs for entrepreneurs like DICE. So you know, there's a motivation that comes from there. So there's completely different sets of motivation that work. In Coke, the motivation was that there was a lot of like learning and growth, and at a like really high rate. So constantly, because you know the pressure is so high, you have to evolve a lot. But in British Council, there was like you have to apply yourself in a different manner. So there's growth in a different way.
تو یہ تھا دونوں کے اندر فرق. زبردست زبردست. اینڈ آئی سی دا ڈائیورسٹی ان دیئر ایز ویل. کوک being a fast paced company and the constant learning evolved over there, and then British Council جہاں پہ آپ نے تھوڑا کامنس کے ساتھ ایک ڈفرینٹ انڈسٹری کے اندر چیزوں کو سمجھنا ہے اور پھر ایگزیکیوٹ کرنا ہے. آئی تھنک both of them have their strengths as well, and I think that give you a purpose, because آپ نے پہلے بات کی کہ you always wanted to make a change. And I personally believe as well, based on my experience, کہ آپ کو اگر ایک پروفیشنل بیک گراؤنڈ سے کچھ چیزیں سیکھنے کو مل جائیں تو آگے آپ کے وینچر میں ڈیفینیٹلی ہیلپ کرتی ہیں. سو کمنگ ٹو مائی کوشچن 2, ٹیل us about what is گھر پر. تو گھر پر اسینشلی ایک ہے ایٹ ہوم بیوٹی بزنس. تو ہم کرتے یہ کیا ہے کہ ہم عورتوں کو ٹریننگ دیتے ہیں, اینڈ عورتیں وہ آتی ہیں جو مارجنلائز کمیونٹی سے ہوتی ہیں یا مائنورٹی بیک گراؤنڈ سے ہوتی ہے. اگر آپ پاکستان میں سلون انڈسٹری کو دیکھیں تو 70 to 80% جو وہاں خواتین کام کرتی ہیں وہ کرسچن بیک گراؤنڈ کی ہوتی ہیں, بیکاز یہ انڈسٹری ہی ایسوسیٹ ہو گئی ہے ود اے سرٹن طبقہ اور ایک سرٹن لائک ریلیجن کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کیا گیا ہے. تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ ایک خاندان سے ہے جہاں پریویلیج ہے, آپ کی ایک ذمہ داری وہاں ہوتی ہے. اور بچپن سے ہی ہم نے دیکھا تھا, میری نانی نے لاہور میں سب سے پہلے ہی NGO کھولی تھی. This is in 1960. So the first NGO that was registered was by my grandmother. So we kind of grew up with a lot of philanthropy around us. ہم نے دیکھا تھا کہ لوگ مدد کر رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں تھی. تو انسٹیڈ آف کہ ہم گھر پر کو کنزیومر سائڈ سے اپروچ کرتے, ہم نے ایک فرق طریقے سے اس کو اپروچ کیا تھا. ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم عورتوں کو فائنینشلی کس طرح امپاور کر سکتے ہیں. تو شروع میں آئیڈیا یہ تھا کہ ہم ایک ٹریننگ انسٹیٹیوشن بنائیں گے جو ایک اعلیٰ درجے کی ٹریننگ دے گی عورتوں کو, اور وہ بیوٹی اسکل میں ماہر ہو جائیں گی. مگر جب ہم نے ریسرچ کرنی دیکھی تو دیکھا کہ پاکستان میں اتنے ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہیں, اینڈ اس میں ان کا سکسیس میٹرک یہ کبھی نہیں تھا کہ ان عورتوں کو جابس ملی ہیں کہ نہیں. ووکیشنل ٹریننگ کا یہاں ہوتا تھا کہ بس عورتوں کو لے کر آؤ اور جس طرح گائے بکریاں ہوتی ہیں ان کو بس نکالتے رہو. یہ نہیں دیکھنا کہ انہوں نے اسکل سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا, کس لیول کا ہے کہ نہیں ہے. تو اگر وہ سلون بھی جاتی تھی نوکریوں کے لیے, ان کو سلون پھر کہتا تھا کہ بھائی آپ تو 6 مہینے فری کریں کام, کیونکہ آپ کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. واو, نہیں اس ٹریننگ کے بعد بھی آپ کو کچھ نہیں, ٹریننگ کے بعد بھی آپ کو کچھ نہیں آتا. واز پریکٹیکل ایکسپوجر نہیں ہے آپ کے پاس. ایبسلیوٹلی پریکٹیکل ایکسپوجر نہیں ہے. دوسرا کریکولم نہیں اس طرح بلڈ ہوا ہوا. بیوٹی انڈسٹری کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ 6 مہینوں میں سب کچھ سکھا سکتے ہیں. دیٹس ناٹ پاسبل. یہ اس طرح آپ کہہ رہے ہو جس طرح کہ آپ 3 چیزوں میں 2 سال میں ماسٹرز کرتے ہیں. ہر چیز کی اسکل سیٹ فرق ہے. اگر آپ نے فیشیل کرنا ہے اس کا فرق اسکل سیٹ ہے, مساج کرنا ہے اس کا فرق ہے. تو وہ آپ کی بیس بھی پوری مضبوط نہیں ہوتی تھی اور آپ گریجویٹ ہو رہے ہوتے تھے. بٹ ڈونٹ یو تھنک یہ کچھ کریش کورس ٹائپ مجھے فیل آ رہی ہے آپ کی بات سے کہ یہ جو کورسز تھے, جو یہ ٹریننگ تھی, یہ کریش کورس تھے, یو نو, فار ڈمیز, اسٹارٹنگ فرام زیرو اینڈ ریچنگ سم ویئر اینڈ دین اپلائنگ دیٹ ان سم بیوٹی بزنس اینڈ دین ریفائننگ یور اسکل سیٹ. پر یہ کریش کورس نہیں تھا نا, بیکاز کریش کورس کے اندر وہ پھر بھی ایک چیز کے اوپر آپ کو دیتے ہیں نا زیادہ. اچھا ٹھیک ہے نا. اگر آپ کی دیکھو بیوٹی بزنسز کے اندر, اور اگر آپ بیوٹی ٹریننگ بھی دے رہے ہو, ایک تھیوری ایسپیکٹ ہوتا ہے, اس کے بعد بہت زیادہ پریکٹیکل ایسپیکٹ ہوتا ہے, اور ہر پریکٹیکل ایسپیکٹ میں ڈفرینٹ ایک شعبہ ہے. ٹھیک ہے نا, کہ فیشیل کمپلیٹلی فرق ہے کیونکہ وہ شکل کے اوپر کام ہو رہے ہیں. شکل کی چیزیں آر کمپلیٹلی ڈفرینٹ جو جسم کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا. بالوں کا ہیئر ڈائی میں آپ کی کمپوزیشن بال کی بایولوجیکلی بہت فرق ہے کمپیئر ٹو دا اسکن آن یور باڈی. تو اس حساب سے اگر آپ صرف بیس کر رہے ہو تو آپ بیسکلی ایک بگنر بیوٹیشین بن گئے ہو. ٹھیک ہے. اینڈ یہاں اتنا لوگوں میں نہیں ہے کہ وہ پھر خود, کوئی لوگوں میں وہ ہوتی ہے, وہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ آگے جا کر کے میں خود ہی سیکھ لوں گی. مگر آپ کو یہاں ہینڈ ہولڈنگ کرنی ہوتی ہے, بیکاز یہ جو لڑکیاں اور جو عورتیں آتی ہیں یہ نہ ان کے پاس زیادہ ایجوکیشن ہوتی ہے, تو ان کے پاس وہ ایکسیس بھی نہیں ہے. ہم اپنے طور سے نہیں دیکھ سکتے نا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتی نا کہ بھائی عروج میرے میں تو ہے وہ کیوریوسٹی, تو میں نے تو کر لیا, تو یہ لڑکیاں کیوں نہیں کر سکتی. وہ نہیں کر سکتی, ان کے پاس ایکسیس نہیں ہے. تو گھر پر کا آئیڈیا یہاں سے آیا تھا کہ ہم ایک ایسا ادارہ کھولیں جس سے ہم عورتوں کو ایک تو ٹریننگ دیں,
اور اتنی اعلیٰ معیار کی ٹریننگ دیں اور اس کے بعد ان کو نوکری بھی دیں جس میں ان کی جو انکم ہے وہ یہ نہ ہو کہ وہ 8,000 یا 6,000 ہو, ان کی انکم ایٹ لیسٹ 20,000 ہو. مگر اب ہمیں ماشاءاللہ 4 سال ہو گئے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایکچولی ایک بیوٹیشین مہینے میں 50,000 گھر لے کے جاتی ہے. اوہ زبردست. That's good amount of money. I mean in comparison to اگر دوسرے بزنس ماڈلس کی بات کریں گے اکانومی کے اندر تو I mean it's a decent number. لیکن اگر ہم بات کریں گھر پر کے اوپر کہ ایک بیوٹیشین خاتون بننا چاہ رہی ہے, زیرو سے اسٹارٹ کرنا چاہ رہی ہے, تو وہ بھی آپ کے پاس آ کے رجسٹر کر سکتی ہے یا آپ کو کچھ پہلے سے کوئی پری ریکوزٹس چاہیے ہوتے ہیں کہ پھر ہی بندہ آپ کے پاس ایز اے بیوٹیشین رجسٹر ہوتا ہے؟ نہیں, آپ کو بے شک کچھ بھی نہ آتا ہو آپ گھر پر کو جوائن کر سکتے ہیں. اور گھر پر کا جو فرق بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم آپ کو سب کچھ سکھائیں گے, ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اسپیشلائز کروائیں گے اس کیٹیگری میں جس میں آپ سیکھنے کے قابل ہیں. تو ہم پہلے ٹیسٹ لیتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا میموری لیول کدھر تک ہے, آپ کا ہینڈس کا اسکل کدھر ہے, اس حساب سے ہم آپ کو ایک اسکل ایلوکیٹ کرتے ہیں جو پھر وہ سیکھتی ہیں. اور ہماری ٹریننگ ہوتی ہے 8 سے 10 ہفتوں کی. Okay, and this is free of charge for the beautician? This is free of charge completely. And then essentially ہوتا یہ ہے کہ جو بیوٹیشینز ہیں وہ مائکرو انٹرپرینور بن جاتی ہیں بیکاز وہ اپنی ٹول کٹ میں انویسٹ کرتی ہیں. تو اپنی ٹول کٹ میں جب وہ انویسٹ کرتی ہیں تو ان کے اندر ایک تو وہ اونرشپ آ جاتی ہے, بیکاز اگر آپ یہ سارے NGOs بھی دیکھیں, جب آپ کسی کو کچھ مفت کا سکھاتے ہیں اس کی قدر نہیں رہتی. اور تو ہم ایک چیریٹی نہیں ہے, ہم ایک NGO نہیں ہے, ہم بھی ایک بزنس چلا رہے ہیں, مگر ہم ایک سوشل انٹرپرائز ہے جس کا مطلب ہوا کہ ہم اچھائی بھی کر رہے ہیں بزنس کے ساتھ ساتھ. بالکل. تو یہ بیوٹیشین اپنی ٹول کٹ میں انویسٹ کرتی ہیں, وہ پھر ان کو ٹول کٹ ملتی ہے اور پھر وہ وہاں سے اپوائنٹمنٹس لیتی ہیں اور 60 سے 70% ان کو ہر اپوائنٹمنٹ پر ملتا ہے. زبردست زبردست. سو اگر ہم بات کریں آپ کے وینچر کی ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی, از دیئر اینی ٹیک انوالو ان اٹ یا یہ ٹوٹل آف لائن بیسڈ ماڈل ہے آپ کا؟ نہیں, تو ٹیک کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ٹیک تو اب فیوچر ہے, بالکل پوری دنیا میں فیوچر ہے, اور جتنی جلدی پاکستان یہ سمجھے گا اتنی جلدی ہم آگے بھی بڑھیں گے آگے. تو ہمارا جو بکنگ سسٹم ہے وہ پورا ٹیک کے اوپر ہے. تو کلائنٹ جو آتا ہے وہ ایپ کے تھرو ہمیں بک کر سکتا ہے یا ویب سائٹ کے تھرو بھی ہمیں بک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. جس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ٹیک کرنا بہت ضروری ہے, بیکاز آپ کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ہاف سے بھی کم ہو جاتا ہے. اگر آپ کو کوئی, میں آپ کو مثال دیتی ہوں, ایک عورت کال کر کے کہتی ہے کہ جی میں نے ویکسنگ بک کرنی ہے. اگر آپ فون پر لے رہے ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں اچھا جی میم کون سی باڈی پارٹ کروانی ہے, پھر وہ آپ کو پوری لسٹ بتائیں گے. پھر وہ کہیں گے اچھا جی میم آپ بتائیں یہ والی ویکس کروانی ہے یا یہ والی ویکس کروانی ہے یا یہ والی ویکس کروانی ہے. پھر وہ پہلے پوری پرائسز پوچھیں گے آپ سے, پھر آپ اس طرح کریں گے اور اینڈ میں وہ کہیں گے چلیں جی تھینک یو ویری مچ, اور فون بند کریں. ٹائم بھی اور کسٹمر ایکسپیرینس دونوں ہرٹ ہو رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک تو ٹرانسپیرنسی ہے پرائسنگ کی, اور سلونس کے اندر یہاں کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. ایک کلائنٹ جائے گا, ان کو آپ ایک اور پرائس بتائیں گے, کسی اور کو کوئی اور بتائیں گے, بیکاز آپ کے پرائس ریٹس ہیں ہی نہیں سلونس میں پاکستان میں. یو کانٹ ایکسیس دیم. سو یہاں the price rates are over there, you book اور 2 گھنٹے کے اندر بیوٹیشین آپ کے گھر پر ہوتی ہے. زبردست زبردست. اینڈ which cities do you are live in right now? تو ابھی ہم ہیں لاہور میں, اسلام آباد اور پنڈی. لاہور, اسلام آباد, پنڈی. And any future scalability plan to go into other cities as well? تو انشاءاللہ ہم عید سے پہلے اور پنجاب کے شہروں میں جائیں گے. زبردست. And why not South? I mean, talking about South, specifically I'm talking about Karachi right now, because Karachi is a huge market, there is huge potential over there. تو اس کو ابھی تک آپ نے loop in کیوں نہیں کیا؟ تو Karachi definitely is a market that we want to expand into, but because Karachi is actually a beast on its own, yes, we want to do it the right way. Essentially کراچی ایک ایسا شہر ہے جس کو اگر آپریشنلی آپ دیکھا جائے تو اس کے اندر اور فرق بھی شہر ہیں. تو ہر ایریا کراچی کا ایک فرق شہر کی طرح زونز ہیں, تو ہر ایریا ایک فرق شہر کی طرح مانا جائے گا اور اس کی آپریشن اس طرح ہوئے گی. ہم پنجاب میں اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ ایک تو جو بیہیویئر, کنزیومر بیہیویئر ہے وہ بہت سملر ہے لاہور کی کنزیومر بیہیویئر کا. ٹھیک ہے. اینڈ بیکاز جو باقی کے شہر ہیں, لاہور از این ایسپریشنل سٹی فار دیم.
a brand which is launched in Lahore, going to those cities becomes easier to be successful. Because आपका trend एक जैसा होता है. कराची के अंदर एक बहुत ज़्यादा मार्केट रिसर्च होएगी. आई एम नॉट सेइंग कि हम नहीं जाएंगे, आई एम जस्ट सेइंग कि जब हम जाएंगे तो हम सही तरीके से जाएंगे, इसलिए हम उसके ऊपर ज़्यादा टाइम देते हैं. Zabardast. I mean that's a good plan actually. I mean replicating the same model because the consumer base geographically similar pattern के ऊपर चल रही है, rather than going somewhere and experimenting, and rather than being successful failing out over there as well. And that's, I believe, is the right strategy. So I mean in terms of, you are a startup, right? Yeah. I mean, so how much you have invested money from your end, and have you taken any funds? जिस तरह हम लोग इस चीज़ की बात करते हैं कि फंडिंग वगैरह हुई है, और are you looking to go down that road? इस तरह आप लोग कुछ सोच रहे हैं? तो इनिशियली तो हमने बूटस्ट्रैप किया था, फाउंडर्स ने बूटस्ट्रैप किया था, एंड 2 years into the business we raised an angel round. We are looking to raise another round, but unfortunately we also got hit by COVID. And kind of that impacted business in a way that we were not anticipating. Yes. Like every business, हर business ने कहा था 2020 is our year. So 2020 was not our year. We're hoping 2021 is going to be our year. Inshallah. So what our plan right now is that we kind of show success in other Punjab cities, and then we kind of like recalibrate and go towards funding. बिल्कुल सही है. And in terms of, if I talk about competition, is there competition, especially in the sense कि offline जो ये beauty salons वगैरह हैं, आपके launch होने के बाद, have they evolved in some way, changed their business model, or thought about going online? नहीं, हमारे जो actual salons है वो तो they really hate us. Because हम आए, उनको लगता है कि हमने एक्चुअली उनकी मार्केट तोड़ दी है, which I don't agree to. I think दो फर्क मॉडल्स हैं जो एग्जिस्ट कर सकते हैं एक ही जगह में. पहले भी आपकी वैक्सिंग वाली एग्जिस्ट करती थी. एक इनफॉर्मल ब्यूटी नेटवर्क हमेशा से पाकिस्तान और साउथ एशियन मार्केट में एग्जिस्ट करता है, और एक आपका है फॉर्मलाइज्ड ब्यूटी इंडस्ट्री. हमारा फर्क ये है कि हम इनफॉर्मल को फॉर्मलाइज कर रहे हैं. ठीक है, ब्यूटी सैलून्स जो हैं वो ऐसी सर्विसेज देती हैं जो घर पर कभी नहीं दे सकता. तो गज़नफर का मैं आपको एग्जांपल दूं, घर पर पैनाडोल है, ठीक है, सर में दर्द होएगी तो आप पैनाडोल लेंगे, ठीक है, मगर आपने अगर विटामिन लेनी है वो सैलून है. ठीक है, तो जो आपके वो काम है, जो सर दर्द आपको लग रही है कि वैक्सीन करवानी है, एक बेसिक फेशियल करवाना है, तो वो पैनाडोल के लेवल पर है. मगर आप कह रहे हैं कि जी मैंने बालियाज करवाना है या मैंने केराटिन ट्रीटमेंट करवानी है, वो सैलून आपको देगा, वो मैं आपको घर पर के अंदर प्रोवाइड नहीं करूंगी. तो सैलून ने इवॉल्व नहीं किया, मगर कोविड के अंदर इंटरेस्टिंगली वन ऑफ द बिगेस्ट चेन्स ने भी एक अपना घर पर लेवल शुरू कर दिया था. अच्छा, शुरू कर दिया था या अभी, I mean is it existing right now? अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट जो एट होम ब्यूटी की मार्केट है उसके ऊपर पूरा प्ले प्राइसिंग के ऊपर होता है. ठीक है, अच्छा, बिकॉज आपने देखनी होती है कि कौन सी आपकी मैसेज कौन सी प्राइस के ऊपर कन्वर्ट करेगी. अगर आप सैलून प्राइस ही लेकर जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है. ठीक है, ठीक है. और in terms of being a woman out there as a co-founder, leading this startup in Pakistan, I mean I'm all up for women leading these startups and being founders and entrepreneurs and creating waves in the startup space, but I also feel, based on my experience, there are challenges out there in the ecosystem as well. So I would like कि आप कुछ हमारे साथ share करें in terms of कि क्या challenges हैं and what kind of support would you require, because there are a lot of incubators and accelerators out there. And then on the government side as well, I think they are also doing a lot of things. SECP ने काफ़ी changes किए हैं कि कंपनी वगैरह की registration easy हो जाए. गवर्नमेंट वाली साइड से भी डिजिटल पाकिस्तान का खैर एक इनिशिएटिव आया था, लेकिन एक अवेयरनेस ज़रूर डेफिनेटली क्रिएट हुई है. So I mean, talk me through in terms of being a woman founder, what challenges, and अगर कोई और खातून अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रही है, what she should look into. ठीक, thank you, that's a really interesting question. और एक सवाल जो हमसे हमेशा पूछा जाता है, but I think इसमें दो एस्पेक्ट्स है. एक तो the fact कि मैं एक औरत हूँ और मैं फाउंडर हूँ, और दूसरा ये कि मैं एक औरत हूँ, एक फाउंडर हूँ, और मेरी बिजनेस भी औरत सेंट्रिक है.
ठीक है, जिसके अंदर एक सोशल एंटरप्राइज का भी एस्पेक्ट है, बिल्कुल, ठीक है. तो वो ऑटोमेटिकली ना एक ऐसा, क्या मैं आपको बताऊं कि लगता है जिस तरह चैरिटी करें, बड़ा नोबल काम करें ये औरतें, औरतों को ये एम्पावर करें, वेरी नाइस एनजीओ चला रहे हैं, ठीक है. एक तो वो ऑप्टिक्स इस तरह की आ जाती हैं. अगर आप देखें एनजीओ भी मोस्टली आप खवातीन के साथ एसोसिएट करते हैं, टीचिंग आप खवातीन के साथ एसोसिएट करते हैं. तो एक तो देयर वाज दिस, बट आई थिंक द बिगर थिंग इज दैट नाउ इन 2020 I saw that there was a change when it came to like investing in women businesses. Co-natural में investment आई है, बैग गैलरी के अंदर आई है, and जो businesses जो औरतों को ही आगे, उनका end consumer भी औरत ही है, ठीक है. तो ये change आ रहा है. हमने 2016 में शुरू किया था. उस वक्त mostly जो trend था वो ये था logistics, transport and e-commerce, ठीक है. So आई थिंक बिकॉज वो ट्रेंड ऐसा चल रहा था, ग्लोबली भी ऐसा चल रहा था कि हर कोई उसी के अंदर लोग जा रहे थे. अगर अब आप देखें तो ग्लोबली भी एक बहुत सी कॉन्वर्सेशन चल रही है दैट ड्यूरिंग कोविड औरतों वाली जो बिजनेसेस थी उनको कम फंडिंग मिली है, ठीक है. तो एक देयर इज दिस एलिमेंट दैट वुमेन गेट लेस फंडिंग. I mean, you are talking globally or you are talking? I'm talking globally. I'm also talking nationally. Okay. Nationally, 2020 has been a better year for us, but it's a very long way to go. ठीक है. Just doing some small program जिसके अंदर आप women empowerment छापते हैं, उस तरह नहीं होता. एक पूरा like societal structure है which needs to change. It's going to take time. I'm not saying it hasn't changed. There is far more opportunity now than there was 5 years ago. So there are changes that are happening. But as a woman, not at the same speed that I wanted them to happen. So there are little things like, there are examples of our CEO is a mother of 4 children. So if, there's a meeting, the question that's always asked is, aren't you stretched to think out of your capacity? कोई आदमी से नहीं पूछेगा कि आपके 6 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, या पूछेंगे कि आप अपनी कैपेसिटी से स्ट्रेच्ड आउट है कि नहीं. जबकि आदमी के अफेयर्स भी चल रहे होंगे, कोई ये नहीं कहेगा किस तरह कर रहे हैं आप, स्ट्रेच आउट कितनी होगी आपकी कैपेसिटी. आई थिंक रोल्स डिफाइन किए हुए हैं, एग्जैक्टली, बायसेस क्रिएट की हुई हैं ऑब्वियसली. तो इस तरह के बस वो आ जाते हैं. एंड देयर आर जस्ट सम ब्लाइंड स्पॉट्स दैट पीपल हैव, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ अवेयरनेस to see कि आपका कहाँ blind spot आ रहा है. And so, another example I'll give is, if a man is quoting a number, he will be believed far more than a woman is quoting a number. If I'm saying कि by 2025, these are the number of appointments we will do, there will be a question that will be asked, are you sure? Achha. Right? But if a man is quoting that number, there's still some acceptance of being like, he might know what he's saying. So these are just first-hand experiences, that we have experienced. So, but, I hope one day, like, when like your daughter is like a co-founder, inshallah, of an amazing startup, like she doesn't have to go through this. Yeah, I mean, I'm hoping. But in case I see where you're coming from, there are a lot of challenges, but ट्रांजिशनली थोड़ा बहुत चेंज स्टेप बाय स्टेप आना शुरू हो गया, एक्सेप्टेंस आना शुरू हो गई. आई मीन यू एंड देयर आर अदर फाउंडर्स आउट देयर दैट आई नो. आई मीन you can talk about Sidra being so successful, right? Absolutely. And then there is Sadaf with her ground setup as well. So और भी लोग हैं, and I'm sure कि आप लोग उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, and you should continue marching on because you are creating example, like you said, for my daughter as well. कि I can say कि Aruj can do it, then you can do it as well. And but in terms of the government side, what are your thoughts over there? So I think the government is doing a good job. I think the previous government kind of like did a really good initiative when incubation started. The problem that I have is that when everything becomes a number game, when it becomes a number game, then it's not about the startup's health that people are seeing. People are just seeing kitne startups churn out ho rahe hain out of cohort after cohort. And uske andar it becomes problematic. So I think everything has a journey, and that is how one learns. Like what Umar Saif did was exemplary. Yes. Like
launching Plan 9, Plan X is amazing. We have accelerators like I2I, which is also very, very good, you know. But what I find in the startup ecosystem is that starting is not a masla over here. You know, starting के लिए आप अगर resources भी देखें, online भी बहुत ज़्यादा resource होते हैं, मगर जब आप plateau करते हैं, scaling के ऊपर बहुत मुश्किल होता है. बिल्कुल. ठीक है, तो वहाँ how can the government bodies help? You know, how can you have like partnerships with government institutions in which it's easier to partner with them? You know, and easier to validate your business model as well. Absolutely. And then you can go to the investors and say that we have these collaborations Yeah. with the government institutes. But in terms of incubators, so मेरा थोड़ा सा experience ये है कि they are more like sort of, you know, co-working spaces. Rather than giving you a path or something there as a learning curve कि जिससे आप कहीं पे पहुंच सकें. I see most of startups just hanging out over there, you know. आपको ऐसा लगता है या आपके ख्याल में ऐसा नहीं है? तो मैं किसी इंक्यूबेटर का हिस्सा नहीं थी ना, in that sense. तो हम एक्सेलरेटर का हिस्सा थे, मगर हमने खुद ही शुरू किया था घर पर. तो I think मैं इसके ऊपर कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती, मगर मुझे लगता है कि जब आप नंबर्स की गेम करते हैं तो फिर पाथ कोई नहीं बन रहा ना. हाँ. तब आप बस कह रहे हैं कि भाई ये 6 महीने का कोहॉर्ट है, इसमें लेकर आए 20 स्टार्टअप, ठीक है, और वो बेशक जैसा मर्जी स्टार्टअप हो, ठीक है, और आप उसको बस निकालें. आधा वक्त तो जो इंक्यूबेशन का करिकुलम होता है वो यही होता है कि भाई बोलना कैसे है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, जो मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी का कोर्स है एज अपोज टू कि आपकी ऑन ग्राउंड लर्निंग कैसी है. ठीक है, तो स्टार्टअप के अंदर आपकी लर्निंग कभी बुक से नहीं आएगी. आपकी लर्निंग जब आप गिड़गिड़ाएंगे और आप ठोकर खाएंगे तभी आप सीखेंगे कि अगली बार क्या नहीं करना. वहां से आप सीखते हैं. तो अगर आप वो करवा ही नहीं रहे तो स्टार्टअप तो आगे बढ़ ही नहीं सकता. I think going out there in the market and testing your idea, जब तक आप वो चीज़ नहीं करेंगे तब तक आप कहीं पे भी नहीं पहुंच सकते. बिल्कुल. So in terms of अगर हम आगे चलें VC space की थोड़ी सी बात करें, there are few VCs out there, सरमाया कार, Fatma Ventures, I2I also invest to some extent. Then there's High Output Ventures, Singapore based, that started their accelerator program. They are also doing the funding, but still I feel there is a lot of lack over there. So what are your thoughts on that? I won't say there's a lack. I would basically say कि जो हमारी VC space है वो भी startups ही हैं अभी. अच्छा. ठीक है, तो which is good. If you look 3 साल पहले और अब का क्या ticket size है, there is a huge difference, right? So instead of kind of nitpicking, I think we should also celebrate the growth that the VC landscape has achieved. You know, we have female VCs. That's huge. So it's growing. It takes time. It's just that startup के अंदर everything is so fast paced that we want everything to become at that exponential rate. But it's a new concept. These people are very brave to put their money in. It takes a lot of courage to put your money in to people and their businesses and their ideas. So Aruj, इंटरव्यू को कंक्लूड करते हैं. आपने बहुत टाइम दिया हमें. एक आखिरी सवाल फेलियर्स के ऊपर. आई मीन फेलियर्स एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ के अंदर, बट आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम देम एज वेल. एंड आई फील के फेलियर्स को लोग नेगेटिवली लेते हैं, बट इट्स अ पॉजिटिव थिंग बिकॉज दे गिव यू डेटा पॉइंट्स टू बी मोर सक्सेसफुल. सो कोई ऐसा फेलियर जिसने आपकी लाइफ के अंदर पर्सनली और प्रोफेशनली एक बिग चेंज लाया हो जो आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? आई थिंक मैं घर पर के हवाले से फेलियर के बारे में बात करती हूँ. एक ऐसा था कि हम शुरू कर रहे थे, हम फाउंडर्स में कोई टेक एक्सपीरियंस नहीं था. तो जब हम लॉन्च कर रहे थे अपनी ऐप को तो हमने कोई यूजर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सोचा था. हमने बस सोचा था ऐसी ऐप होनी चाहिए, उसमें ये शशके होने चाहिए, ये ऐसा होएगा वैसा होएगा, और उसको हमने वो बनवा दी. अब उसके अंदर हुआ ये कि जो एंड यूजर था जिसने इस्तेमाल करना था उसको वो बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रही थी और वो अडॉप्शन भी नहीं आ रही थी ऐप के अंदर. तो टेक फॉर अस हैज बीन लाइक अ जर्नी ऑफ फेलियर्स एक्चुअली.
like developing the tech at the place that it is right now. We didn't have a CTO. Then, you know, we kind of realized the importance of having a CTO on the team. So now we have a CTO on the team who is basically leading on the product. So product किस तरह innovate होना चाहिए है, both beautician end से भी किस तरह होना चाहिए और client के end से भी किस तरह होना चाहिए, और फिर उसके अंदर और फर्क किस तरह modules आ सकते हैं. तो I think for us like that was the biggest failure in the sense because we thought that हमें सब कुछ आता है. You know, जब आपको लगता है कि हम एक मुकाम पर पहुंच गए हैं, वो भी एक फेलियर है एक किस्म का, बिकॉज आप फिर आगे नहीं बढ़ते. तो आई थिंक ठोकर का खाना बड़ा जरूरी होता है टू ये जानने के लिए आप इंसान हैं और आगे आप में बढ़ने की कैपेसिटी है और मेहनत करनी चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. और जब तक आप फेलियर से गुजरेंगे ही नहीं तब तक आई बिलीव कि आप सक्सेस पा ही नहीं सकते. अगर आप स्टैग्नेंट है एक जगह के ऊपर, दो कि आप बाय डेफिनेशन सक्सेसफुल हैं, आप अपना काम पूरा कर रहे हैं, बट आप रिस्क नहीं ले रहे, आप डाइवर्सिटी नहीं लेके आ रहे, आप डिफरेंट कंपनीज के अंदर काम नहीं कर रहे, या आप अपने स्टार्टअप के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर रहे, या आप मार्केट के अंदर जाने से डर रहे हैं और आप बैठे रहे हैं अपनी वर्क प्लेस के अंदर और वहीं पे एक आइडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, और फाइनली व्हेन यू गो आउट देयर the customers are not going to accept you, right? Absolutely. Because you were fearful of that particular idea getting failed. Yeah. And it will get failed. So like you said कि आपको इतना फीडबैक मिला और उसके ऊपर आपने अपने प्रोडक्ट को इवॉल्व किया और चेंज किया, and there is I think always room for improvement. So thank you Ruj. On that note, thank you for joining us on Gus Pro, and I wish you and Ghar all the best luck. Thank you Zanfar. Thank you for having me. It was a pleasure. Same here ji. Allah Hafiz.